मैं हूं उमर, मैं हूं सारिया और आप देख रहे हैं यूएफ रिएक्शन। तो गाइज आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम एक डॉक्यूमेंट्री पे वीडियो लेकर आए हैं। तो गाइज आज का जो टाइटल है वो है जी डॉक्यूमेंट्री ऑन विलेज लाइफ ऑफ बांग्लादेश। तो आज विलेज लाइफ देखने जा रहे हैं, और विलेज लाइफ आप जब भी देखेंगे बड़ी अच्छी लगती है उसकी डॉक्यूमेंट्री देखना, क्योंकि विलेज लाइफ जितनी सिंपल होती है आपको बहुत ज्यादा मजा आता है वीडियो देखने का। और पहले हम वीडियो देख लेते हैं, वीडियो के हाँ बिल्कुल बाद में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करें। बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। बिल्कुल। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हैवी गो। वाह यार, ग्रीनरी बांग्लादेश की मैं ग्रीनरी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं। The largest delta in the world is like a painting drawn by nature, embellished with river melted vast plain land. Very nice. क्या जगह है यार, कमाल। Hilly region pervaded with lush green forest and lucid coast of world's longest unbroken sea beach. क्या roads हैं। Urban areas cover 15% of Bangladesh. The rest 85% is full of enchanting villages. वाओ, हवा के साथ कितना मजे का लग रहा है सीन। सादिया लिंक का जो ब्लॉग देखा था विलेज का, वो बहुत कमाल का था। 3/4 of the total population lives with warmth of affection in more than 87,000 serene villages. Life is simple here. Life is simple here. Peace prevails everywhere. Here, livelihood is very easy. Thus, life is full of comforts, full of happiness. ऐसे ही है। The village women are artificers. With artistic sewing, they bind the life into a bond of tradition. Neat and tidy clay houses. Built in ancient architectural style, these eco-friendly clay houses are creative art of aesthetic villagers. The beauty of village houses differs from region to region. The houses are made of wood and tin. These are also captivating in craftsmanship. बहुत पीसफुल लाइफ होती है विलेज की। बिल्कुल। People close to the Bay of Bengal have embedded their abodes on the coast within the amazing enclosure of nature. This group fishing is one of the interesting events of the riverine village life. Enormous fishes are in the watercourse of the villages. In production of freshwater fishes, Bangladesh is second in the world. There is an affinity of the rivers and riverside markets with most of the villages. These huts and bazaars are the marketplace of agro products from the villages
the powerhouse of village economy, the main communication center for the villagers. Rural fare is another stream of delight. The soil is fertile, farmers are hard-working, abundance of crops throughout the year. Being the third largest paddy producer in the world, Bangladesh showcases a spectacular scenario of harvesting. The activities of threshing spread the trade of harvest feast door to door. In the village, harvesting season means a busy household. Rice flour is being produced by this traditional grinding machine, dheki, for making seasonal cakes. Oh, wow. This arrangement is for celebrating the harvest feast. The villagers of Bangladesh are famous for their hospitality. The festive rural life spreads the splendor of folk lifestyle through its magical melody. The cultural heritage of the village is vividly reflected in the wedding ceremony. As a social program, wedding is the most joyful event. A variety of formalities, numerous rituals. Hymn of spring all around. Wow. Carrying away the warmth of summer, the monsoon streams revive the land. क्या beauty है यार इसकी। In the dew-drenched winter, the village shows a different color. Dwelling a frosty fog in the morning, thus launching of the day, fantastic duality. The molasses makers collect sweet juice from date trees at dawn. Winter is very much amusing here. The potters of the village create a phenomenal artwork with expertise inherited from generation to generation. The descendants of the world-famous muslin weavers of Bengal are still knitting artistry in the villages. The national sports, Kabaddi, a popular village game. Exciting horse racing spreads the joy of thrill into the minds of sports-loving villagers. The most enjoyable
folk sports festival with excitement is Nauka Baich, the boat racing. वाओ, The villages of small बहुत ethnic कमाल का groups view are in the hilly region. Here, nature is dense, life is diverse. Be it the infrastructure or household works, there is uniqueness everywhere. The diversity of diligent and customary lifestyle has fabricated the hilly villages as a fascinating resource of community-based tourism. With tranquility of nature and soul, the rural life of Bangladesh is waiting to make you feel its mellifluent tune. बहुत कमाल की डॉक्यूमेंट्री थी और बहुत ज़बरदस्त ये मुझे लगी डॉक्यूमेंट्री। फर्स्ट टाइम हमने जो है एक बांग्लादेश जो विलेज है बांग्लादेश में जो उसमें उस पर हमने फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट्री देखी है और क्या एक खूबसूरत अंदाज में उन्होंने कैप्चर किए हुए थे उसमें सीन। और यार अगर विलेज लाइफ की बात की जाए ना तो विलेज लाइफ का अपना स्टाइल है, अपना स्टाइल है, सिंपल सी लाइफ है, सिंपल लाइफ है। और वहाँ के लोग जैसे कि डॉक्यूमेंट्री में बता रहे थे बहुत खुश वहाँ के लोग रहने वाले हैं, खुशहाल हैं। वो एक खुश इसलिए भी रहते हैं उमर भाई कि ना वहाँ पे इसलिए भी ज्यादा खुश रहते हैं, वो आपस में एक दूसरे को टाइम बहुत ज्यादा देते हैं। बिल्कुल। और वहाँ पे हर चीज का कल्चर का एक अपना तरीका है। वहाँ पे आप वेडिंग सेरेमनी देख लें तो उनका एक अपना स्टाइल है। और अगर वहाँ पे स्पोर्ट्स की बात की जाए विलेज के तो वहाँ के उनके अपने खेल हैं। लोग वहाँ के खेल को वेडिंग सेरेमनी हो या कोई भी इवेंट हो उसको एंजॉय करते हैं। और क्या ही टैलेंटेड लोग हैं वो, और हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट भी हैं क्योंकि उनके हाथ में एक ऐसे हुनर है कि अपने काम खुद करते हैं वो। और जैसे वो मिट्टी के बर्तन बनाते हुए दिखा रहे थे तो वो एक अपना ही मतलब खुद मेहनत करते हैं, खुद ही चीज़ें बनाते हैं, खुद ही वो मतलब उसको सेल वगैरह करके कमाते हैं। और वो एक हार्ड वर्क जो में नजर आता है ना तो वो उसमें एक अलग ही खुशी होती है। अलग बाहर तो जो काम कर रहे होते हैं वो तो अलग टैलेंटेड होते हैं, घर की जो लेडीज हैं उनके हाथ में अलग से हुनर होता है। इवन कि अपने हाथ से खुद से वो एम्ब्रॉयडरी कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें किस तरीके से काम करना है और वो बिल्कुल भी बाहर से चीजों को नहीं करते, वो इन्हीं को सेल करते हैं। हर चीज उनकी अपनी होती है, उनकी अपनी लाइफ है एक, और उनकी जो लाइफ में जो सुकून है वो वाकई में नजर भी आता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, सीन्स बहुत कमाल के थे डॉक्यूमेंट्री में। और डॉक्यूमेंट्री जिस अंदाज से उन्होंने कैप्चर की हुई थी ना उनमें सीन्स जो थे वो बड़े कमाल के थे। और ग्रीनरी का तो मैं वैसे बहुत दीवाना हूं बांग्लादेश की, जैसे कि आपको पता है हर वीडियो में मैं बोलता हूं कि बांग्लादेश में जो ग्रीनरी है ना वो चाहे विलेज में हो चाहे सिटीज में हो बहुत कमाल की है। और ये एक नेचुरल ब्यूटी है जो बांग्लादेश में जो है हमें दिखाई देती है, और ये है वाकई में एक नेचुरल ब्यूटी है, इसमें कोई शक नहीं। तो बहुत कमाल की आज की वीडियो थी गाइस। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन पे हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।